So I'm releasing old toxic, Yes. जो मेरे लिए अब टॉक्सिक हो गए हैं लोग, एडिट हो गए वो हाँ सारे. उनको रिलीज करें, स्प्रिंग क्लीनिंग. और नए फ्रेंड्स जिनकी एनर्जी आपके साथ अब अलाइन करना शुरू हो गई है, वो आ रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. Yeah. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों की जो टॉक्सिक लाइव्स हैं जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते, बर्दाश्त करते रहते हैं. हाँ And they're giving us anxiety, and our nervous system is constantly telling us और वो this गंदी is not. एनर्जी जो होती है, वो गंदी ईवल आई जिसको हम कहते हैं ना, वही होती है. वही आपके पास आ रही होती है, आप उसको वार्ड ऑफ कर रहे होते हो, बट यू डोंट रियलाइज यू कैन कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम इट. But do you know that your gut is always telling you Yes. bad energy, good energy, bad, and we are just silencing our gut all the time. बट साइलेंसिंग ही तो इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर ना. यही तो चुप रहो, मुसीबत है. चुप रहो, खामोश रहो, बर्दाश्त करो. बर्दाश्त करो. स्टूपिड. तो वो हम लोगों को भी बर्दाश्त करते हैं और सिचुएशंस को भी बर्दाश्त करते हैं और मिसहैप्स को भी बर्दाश्त करते हैं. बस बर्दाश्त बर्दाश्त माफ बर्दाश्त. और माफ कर दो. जबकि बर्दाश्त कहा गया है फॉर थिंग्स विच आर गुड फॉर यू. ओके, लाइक फास्टिंग. भूख को कंट्रोल करो, इट्स गुड फॉर अस. बीइंग हंग्री इज ग्रेट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. तो हम वो उस वे में समझ रहे होते हैं कि बुरी चीज़ों को बर्दाश्त करना है बस. एग्जैक्टली. Yeah. अंडरस्टैंड. या बुरा टाइम बर्दाश्त करो, जैसे तुम्हारी अम्मी ने किया, सर्वाइव किया. दैट्स अबाउट वो एक और बर्दाश्त है. एग्जैक्टली. हमने इतना मुश्किल टाइम देखा और बर्दाश्त किया. एंड माई मदर वाज लाइक, नाउ शी सेज, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सा तंग नहीं किया बनवी भैया कि कहें कि वो आई वॉन्ट दोज क्लोथ्स या वो फलान है, ये पहना हुआ है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए. नथिंग. बिकॉज वी न्यू दैट देयर इज नथिंग. तो कहाँ से आएगा? तो फैमिली थी ना, एंड ये बॉन्डिंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग. बट यू नो आई थिंक इट्स सैड के बट इट्स सैड एंड देन ये लाइक यू सेड कि वो इट्स गुड आल्सो दैट यू हैव लर्नड सो मच दैट नाउ यू कैन. Now everything that comes is a blessing. But it was traumatic also for a child. Traumatic not because वो चीज़ें नहीं थी, but probably seeing your mother so stressed. And now me and my mother both are on this journey. It's amazing. जब हम अपने traumas को heal कर रहे हैं, मैं उनको चीज़ें भेजती हूँ, वो मुझे भेजती हैं, हम podcast exchange करते रहते हैं. Really cool. Oh my God, it's amazing. So we're teaching each other things. And we're on this journey where I have imagined it has taken me many years to introduce this idea to my mother कि पुरानी cycles में नहीं रहना, thought cycles में. Because हम इतने comfortable होते हैं अपने negative past के बारे में सोच के कि we feel like we can't let that go. And you have to let it go. You have to forget and forgive. ये जो कहते हैं ना, forgive and forget. It's not for other people. It's for you. It's for your nervous system. Exactly. Your body, your shoulders, your neck, which is tight because you're thinking of all these things. Right? It's not, you don't want to forgive the people. I mean, of course you forgive the people, but you're not saying that ये बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ और no. You're just saying, I can't hold on to this anymore. Yeah. So, you know, so much happened to my mom. Family ने help नहीं की, ये नहीं किया. And to see my mom constantly miserable until, I think, I don't know, until I started working, maybe. Because that's when your responsibility, वो कहते हैं ना कि आप हज नहीं करने जाते जब तक आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो जाए. पहले कहते थे शादियाँ नहीं हो जाए, तो खैर वो अब I don't believe in that now. I think जब तक आप के बच्चे पैरों पे खड़े ना हो जाए, नहीं देखो सेटल ना हो जाए, yeah, but नहीं, it wasn't that. It was like financial stress था. ठीक है, वो रेंट कहाँ से देंगे? So until my mom built her own little house, which is when I went to college, प्लॉट लिया, फिर उस पर घर बनाया आहिस्ता आहिस्ता, until आपको अपने घर की वो हो ना सिक्योरिटी, you're not, I would say, you don't feel secure. Right. Because you're you like, don't want to be on the road. You don't want to be on the road. So I think that was probably वो थोड़ा कम होता गया. फिर उनको ये स्ट्रेस था, अब ये बेटी है और अब बेटी का क्या होगा इस दुनिया में, बिग बैड वर्ल्ड में बेटी है और बेटी ग्रामर स्कूल जा रही है
और बेटी पतलून पहनती है और बेटी एनसीए जा रही है और बेटी को प्रोटेक्ट कौन करेगा क्योंकि यहाँ तो ऑल मैन आर बैड. एक ये भी कॉन्सेप्ट था जहन में जो अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब माँ का तो यही होता है ना दैट ऑल पराए मर्द विल ट्राई एंड हर्ट माई डॉटर. एंड ऑल्सो स्पेशली सिंगल पेरेंट, बाप नहीं है, बाप का साया बाप नहीं है, कोई चाचा मामा नहीं है. लाइक एवरीबडी वाज इन कराची एंड शी हैड लेफ्ट दैट, यू नो. सो इट वाज अ लॉट. पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आती कि एक सिंगल पेरेंट के ऊपर, मुझे समझ आती है because I've been a single parent for 24 years. Wow. So I know what that feels like. Responsibilities. Yeah, and I mean, I think maybe the difference is that I had never had any expectations from in-laws or ex-husband. The difference was that I was already educated. You knew. I knew I could work. Yeah. And I could put it, but I think about it now and it's a burden. I think, oh my God, how did I do it? Yeah. But I don't know, उस वक्त आप में, I think जब बच्चे होते हैं ना, एक वो एनर्जी आपके अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, सर्वाइवल मोड यार, माँ का होता है. We can survive without for 7 days without food. More. Yeah. You know, the human body is capable of a lot. But the key thing is कि आप survival mode में से thriving mode में आ जाएं. अच्छा, हम पूरी जिंदगी survival mode में रहते हैं in this country. It's true. हम आज तक मैं सर्वाइवल मोड में एग्जिस्ट कर रही हूँ. मुझे किसी दिन एक्चुअली आई एम रॉन्ग एंड दिस इज सो सैड. इट इज सो सैड दैट द मिनट आई स्टेप आउट ऑफ पाकिस्तान, actually no, the cities, you thrive. No, I feel safe. Yeah, me too. Yeah. It's so sad. अभी जहाज उड़ता है and I feel safe. I'm feeling safe in the jahaz in the air. जिस पे लोगों को जो डर जाते हैं लोग, पैनिक. And I'm like, I'm fine. The minute we leave the cities, I mean, I actually also feel safe in Hunza, by the way. Yeah, me too. The only place in Pakistan where I feel safe is Gilgit-Baltistan. I've been saying this. No woman and child is safe. And I'm going to say it. Thank you for Gilgit-Baltistan. In fact, I am planning on moving my mother there. That's so cool. She wants to live in the mountains, and I'm like, why yes. Not? There's so much peace over there. Yeah. Peace. I know that Ayesha. It's safe. There's 100% literacy. I know the kids. I've played football with those girls. It was wonderful. It's wonderful. It's wonderful that they're so educated. और वो आराम से वो चल रही होती हैं. I meet these girls, कोई doctor, and you know, they're roaming around on the roads freely, talking in English, Urdu, chatting. And it was my idea. I was like, Ammi, one day this idea came to me recently. And I was like, you know, because I've been trying to move my mother, who abhi tak Lahore mein rehti hai. And when my brother moved to Denmark, you know, I've been very stressed. Ek wo stress, Ammi akeli hai. You know, and she's like above 70, mashallah. So I'm like constantly stressed, you know, and she doesn't want to move to Karachi. So I'm like, I need to move her out. She's not working now, right? No. She hasn't worked in 20 years. Okay. No, 15, 16 years. But she has unki zindagi hai. Actually, aapko main bataun na, it's very difficult to move. I know. People when they're settled, especially when they're certain age. Like, Ammi has been with me for 24 years. So I know that Ammi ko, you know, try to get her, because we're all Canadian citizens, and कहा आप भी जाके अपना करा लें. She came back in a month. She said, मुझे नहीं रहना. No, she loves coming to Karachi now because she loves my apartment. The way I've done it up, it's like a मेरी apartment. कल ही मेरी एक और दोस्त आई पहली दफ़ा, and she walks in and she's like, मुझे लगता है मैं किसी spa retreat में आ गई हूँ. तो मैंने कहा, that's the idea. I want to go home to a spa retreat every day. So yeah, my mom loves my place, but उनको ये लगता है कि मुझे वहाँ सब बंद करना होगा because she's alone. तो उनकी वो फ्रिज बंद करना होगा, चीज़ें डिफ्रॉस्ट करनी होंगी, ये करना होगा, वो करना होगा. I was like, Mama. So I was like, you know what, you have to move one day. I was like, I can't have you living there alone. या तो मैं कैमरे लगा दूँ पूरे घर में to know कि आप सही हैं. But that's in privacy की एक invasion है. So I was like, you know, this friend of mine, he's an architect, और वो गिलगित बल्तिस्तान में एक
fabricated pods of villas की communities बना रहे हैं. So I was like, oh my God, let me Perfect just time, get a little pod there. ये सस्ते महंगे भी नहीं हैं. And instead of buying land here or you know making something here, वहाँ एक छोटा सा villa लेते हैं and you live there. It's safe and वहाँ पे cafe भी होगा करीब. I was like, you just run this tea cafe. आप अपनी बनाएं organic goodies जो आप बनाती हैं. And she's like, हाँ मैं वहाँ एक छोटी सी library बना लूँगी. lovely. I was like, oh my God, yes, this villa in the mountains and I will come and visit you. And you make friends with everybody there, all the people who live there. It's perfect. That's right. She can walk around, fresh air. Ayesha, I'm loving this relationship. मुझे लगता है ये podcast जो है मुझे Mother's Day पे रन करनी चाहिए. ये बिल्कुल perfect रहेगी. Mother's Day अभी है ना? आने वाला है. हाँ. Couple of months, but Yes! it's so